starting the next constructions, and today we're going to complete two types of constructions, construction 2 and construction 3. Now I'm writing both together, then we'll draw them. Construction number 2. This is construction of circumcircle of a triangle. And construction 3 is construction 3 is construction of circumcircle of a hexagon, regular hexagon. These two types of constructions we are going to cover today. Construction 2 and construction 3. And then two more constructions, and then this chapter is over. I am writing a random question here on the board for construction 2. Write down. We can do it with an equilateral triangle. Construction of triangle is clear to everybody. Construction of circle to a triangle. Let's write a question. Let's write down a question. Using a ruler and a pair of compass. I am writing this language deliberately. Compasses. What is the meaning of pair? Pair doesn't mean you have to carry two. Pair का मतलब होता है उसमें दो hands होते हैं ना. Pair of scissors बोलते हैं जैसे दो होते हैं तो pair of compass का मतलब एक ही compass है. Pair of compasses only construct. Random question. Okay. Write down. First part. A triangle ABC given AB is equals to 4 centimeters, BC is equals to 6 centimeters, and angle ABC is equals to 90 degrees. Let's do the first part first. है ना? पहला part पहले करते हैं. Triangle construct करते हैं. We have done this in locus also. It's not that difficult. Let's draw. And AB is 4 centimeters, BC, angle ABC is 90. So we try to keep the angle on the base. अगर angle ABC है, आप roughly भी draw कर सकते हैं. So ABC कुछ ऐसा दिखना चाहिए. Angle ABC 90. AB is 4 centimeters and BC is 6. So this is the rough sketch. Let's draw. Base is BC 6 centimeter. Draw करते हैं चलिए. 6 centimeters. 6. And then what angle will you construct here? What angle will you construct here? 90 degrees. How do we construct 90? Now we're going to use a trick over here. Sorry. This is 180, right? And then from here we mark 60 degrees. All of you know how to construct this, right? It's not that difficult, beta. Then from here, 120 degrees. And then this is 120, okay? From 120, one arc, and from 60, one arc. How will we do this? Check. From 120, one arc. And then from 60, one arc.
and this is 90 degrees. But I am not going to draw 90 with this. Be very particular. You can use a D also. Show all the arcs, but 90 should look like 90. See, my scale shows me 90 degrees. So I'm going to use my scale. It should be exactly straight. समझ आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? You can even use the set square for drawing 90. Set square में होता है ना triangular वाला. Exact 90 बनाएगा बेटा, क्योंकि अगर इधर उधर हो गया तो आंसर नहीं आएगा. 90 degrees आगे देखिए. Clear? I used my scale because it was showing 90, so I kept it straight. अगर वैसे बनाते हैं एक्चुअली तो देख लीजिए आप, थोड़ा सा राइट में जाना होता है, बट हम ऐसा नहीं करेंगे. नेक्स्ट पार्ट, व्हाट इज इट? देन वी हैव टू मेजर हाउ मच. What measure? B. Yes. B to A is 4. So take the measure of the compass as 4, like I have taken, and put an arc of 4 centimeter here. And this is the triangle. We can even erase the extra arcs. Like whatever extra we have drawn. B से A तक 4 centimeters. ठीक है? Rough scale. 90 वाली लाइन हमें चाहिए, तो इसलिए डॉटेड नहीं बनाई. ठीक है? चलिए, then this is A. We can even, I was telling you that we can erase the extra arcs. I'm erasing. So it will look neat and clean. I've erased the extra arcs. Check beta. Because we'll need many arcs. काफी सारे बनाने में तो circumcircle के लिए. And then we'll join it. I'm joining these to get the triangle. Okay. नीचे. ये हमारा triangle आ गया बेटा. Now I'll write down the second part. Second part of the triangle question says that, second part, circle which passes through the vertices A, B and C of the triangle. ऐसा सर्कल ड्रॉ करना है जो तीनों वर्टिसेस से पास होता हो. So a circle which will pass through all the three vertices of the triangle will be called what? Circumcircle. Circumcircle वो सर्कल होता है जो सर्कल की तीनों वर्टिसेस से पास होता है, और वो सर्कल के बाहर, ट्राइंगल के बाहर होता है वो ऐसा. क्लियर? ट्राइंगल के बाहर होता है बेटा वो. Any problem? Understood? Easy? So remember, for circumcircle, we draw perpendicular bisectors. Very easy. For circumcircle, we draw perpendicular bisectors. Per. Is that clear? For circumcircle, we draw perpendicular bisectors. Understood or not? Easy? Circumcircle, perpendicular bisectors of any two sides. Any two sides. Whether hexagon or triangle, will draw the perpendicular bisector. Should we start the perpendicular bisector then? Yes, किसी भी दो sides की perpendicular bisector. Let's draw the perpendicular bisector. We know for perpendicular bisector, we have to take the measure of the line. Line should be little more than half of the actual line. इससे थोड़ा आधे से ज़्यादा. I'm using green color for these arcs. One arc up I'll draw and one arc down I'll draw. Clear?
Then I'll flip it, and then from here, you can take. We'll take from B and C also. अभी हमने AC का ले लिया है. One arc from here, and the other arc from here, and then join them with what line? Straight line. It will be, yes, it has to be a dotted line, because question में बोला नहीं है कि हमें कैसी लाइन चाहिए. क्वेश्चन में बोला नहीं है कि हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. So this line will be what? Dotted line. Is that clear? First perpendicular bisector has come. Second perpendicular bisector. Let's draw for BC. Again, same procedure. Measurement more than half. And I'm using blue color for this. देखिए, one arc up, mix up होएगा arc का, कोई दिक्कत नहीं है. One arc down, then we'll flip it. Then one arc again up, coming, yes, and one arc down. If you want, you can even erase the extra arcs. Now, I'll keep my scale straight, 90 degrees, and then a dotted line. All right. Is this clear? Understood? Now we have to find the point of intersection of these. Point of intersection. This is the point of intersection. पक्का? Clear हुआ आपको? देखिए, अब सुनिए, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है बेटा इसका. This will be called as the circumcenter. What do we call it? You can even write it as O or C. लिखते हैं वैसे हम. C already है तो O लिख दिया. अब देखिएगा सर्कल ड्रॉ कैसे करना है बेटा. You have to keep the compass at O and take the needle at C. Okay, थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा इसे. If it is going at C, then you have to check whether it is going from A also. No. Is it going from B also? No. Then we have to do little adjustment. कैसे adjustment करना है? थोड़ा सा right shift करिए. देखिए इसको. अब देखिए, हाँ, अभी लगभग A से जा रहा है. C से थोड़ा सा कम जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा increase कर सकते हैं. देखिए यहाँ पर, ये A से जा रहा है, B से भी जा रहा है, C से बिल्कुल जा रहा है. Is this trick clear to all of you? You don't have to keep the compass exactly at O. You can shift it little left or little right, little up, but make sure that the circle is passing from all the three vertices. अगर बाय चांस भी अगर एक वर्टिसेस से नहीं जा रहा होगा, एक नंबर कट जाता है काउंसिल में. ठीक है, एग्जामिनेशन में. So you may shift the compass needle. Don't keep it at O. Shift it to left, shift it to right, up or down, and then you will get the circle. That's it. Sometimes question will say measure its radius also. We can measure its radius. Radius अपनी measure कर लेते हैं. Sometimes question says that find the measure the radius. कोई दिक्कत नहीं है. कंपास को measure कर लीजिएगा या फिर ऐसे measure कर लीजिए. It's coming 3.4, 3.5 correct. हमने कंपास शिफ्ट किया है थोड़ा सा. बिल्कुल सही है. 3.5 centimeters. But errors are fine here. 3.6, 3.4, 3.7 is fine. All right. So that's it for this. चलिए बेटा, let's do the second type of construction, which is construction of circumcircle of a regular hexagon. So let's write down one question. Write down. Now we're going to do this in the opposite way. Write down the heading. Question. Write down. Question says construct
A regular hexagon of side 4 centimeters also construct its circumcircle. रेगुलर हेक्सागन, इसमें एक ट्रिक सीखिए जल्दी से. साइड ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन, लेंथ ऑफ साइड ऑफ अ रेगुलर hexagon is equals to the radius of circumcircle. Circumcircle. पक्का? ये ट्रिक है इसकी. Although check today in triangle, what did we do? We made the circumcircle at the end, but in a regular hexagon, we can draw the circle in the beginning. We can draw the circumcircle in the beginning, and that's so easy. Means we know whatever circumcircle will come, the radius of that circumcircle will be exactly equal to the side of the regular hexagon. What is the side of the regular hexagon? 4. So circumcircle will also have the radius 4. Is that clear? So this, should I write the steps of constructions? No. Easy है, इतना कोई difficult नहीं. All of you draw the circle quickly. Draw the circle. circumcircle ड्रॉ करना था हमको, वो तो सबसे लास्ट में करना था, बट हमने यहाँ पे ब्रैकेट में प्रॉपर्टी क्या लिखी है? हेक्सागन जो होता है रेगुलर हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन मतलब हेक्सागन मतलब 6 साइड्स वाला पॉलीगन, ऐसा पॉलीगन जिसकी 6 की 6 साइड आपस में क्या होंगी? इक्वल, तो उसे हम बोलते हैं रेगुलर हेक्सागन. पक्का है? क्लियर है? हमने सीखा कि जो सर्कम सर्कल होता है वो रेगुलर हेक्सागन का क्या होता है? सर्कम सर्कल जो होता है उसका रेडियस हेक्सागन के साइड के इक्वल होता है. तो हमने सबसे पहले सर्कम सर्कल बना दिया. आप देखिएगा ट्रिक, हेक्सागन देखिए कि हम कैसे ड्रॉ करते हैं, ध्यान से देखिएगा. बिकॉज इट इज 4 सेंटीमीटर्स, लर्न दिस. वी विल स्लाइड दिस ऑन द सर्कल. स्केल को स्लाइड करिए और कुछ इस तरीके से स्लाइड करेगा जो 4 सेंटीमीटर है बेटा वो एग्जैक्टली यहाँ आ जाए. आगे देखिए 4 सेंटीमीटर सीधा आना चाहिए, एकदम सीधा. उसको स्लाइड करिए कि वो सीधा स्ट्रेट आ जाए. रेडियस कितना लिया है सर्कल का? 4. क्यों लिया है? क्योंकि प्रॉपर्टी होती है हेक्सागन का सर्कमसर्कल रेडियस उसके किसके इक्वल होता है? साइड्स के इक्वल. पक्का? स्ट्रेट ले लिया आपने. कुछ बच्चे रैंडमली ले लेते हैं, पता चल जाता है, फिर हमें छुपाना भी है ये बात. पक्का? सुनिएगा, कुछ इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दिखानी है हमें. शो एटलीस्ट 4 120 डिग्री एंगल्स, ये दिखाने ही है हमें. कम से कम 120 डिग्री एंगल 4 दिखाने हैं इसमें, तो मार्क्स कट जाएंगे. पहला पॉइंट था शो 4 आर्क्स. ऐसा बिल्कुल नहीं है. ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है, काउंसिल में चेक होंगे ये स्टेप्स. कम से कम 4. हमने चीटिंग करी है अभी. हमने सबसे पहले सर्कल बना दिया, हम सीधा जंप कर गए सर्कल पर. ऐसे नहीं होता है. पहले हमें क्वेश्चन में स्टेप में बोला था ड्रॉ कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर हेक्सागन. क्वेश्चन पढ़िए. सो अगर पहले कंस्ट्रक्ट करना था रेगुलर हेक्सागन, हमने गलत करा है, फिर ये आवर प्रोसीजर इज रॉन्ग, मार्क्स विल गेट कट. बट कोई बात नहीं, हम सारे स्टेप्स तो दिखाने हैं एग्जाम में, स्टेप सारे दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. सुनेगा, हमें 120 डिग्री दिखाने हैं 4, और क्या दिखाने हैं? 4 4 आर्क्स. और सर्कम सर्कल के लिए 2 व्हाट? परपेंडिकुलर क्या दिखाने होंगे? बाइसेक्टर्स. बस आप ये 3 चीजें दिखा दीजिए, आपका एक भी नंबर कट नहीं कर सकता कोई, और गलत तो ये होगा ही नहीं. शुरू करते हैं, चलिए. We will take the radius of the compass as 4 centimeters, and then from this point, देखिएगा, ग्रीन वाले पॉइंट से मैं ग्रीन आर्क लगाऊंगा, and this figure has to be symmetrical.
सिमेट्रिकल का मतलब है आप तो रूल्ड पेज यूज कर रहे होंगे, आपको दिख जाएगा कि दोनों आर्क सेम ऊंचाई पे होने चाहिए। अगर दोनों आर्क सेम ऊंचाई पे नहीं है तो गलत हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, बच्चे पूरा साइक्लिक जाते हैं, यहाँ से इधर आ, यहाँ से इधर आ, यहाँ से इधर आ, यहाँ से, उसमें एरर बहुत होता है। एरर के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ऐसे नहीं करिएगा। ऐसे ऐसे घुमा घुमा के जाते हैं ना, अगर पॉइंट 1 का एरर हो गया तो पॉइंट 1 से पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4 तक पहुंच जाता है, वो गलत हो जाता है सब। सो एक लेफ्ट से आर्क लगाइए, एक राइट से आर्क लगाइए, सॉरी, देन 2 more arcs from here. But remember, the figure should look symmetrical. Are you getting what is the meaning of symmetrical? जो कि मेरा नहीं हो पाया है अभी, कुछ गलत हो गया है। I should shift this arc little down. Otherwise error हो जाएगा। प्रैक्टिस करेंगे एक बारी में आ जाएगा। सिमेट्रिकल का मतलब है सब ये इसके सामने होना चाहिए, देखिए ये एग्जैक्टली इसके सामने, इसके एग्जैक्टली ये सामने, दैट इज सिमेट्रिकल। परफेक्ट शेप यही होती है हेक्सागन की, और आ जाती है हल्का फुल्का एडजस्टमेंट करके, कोई बड़ी बात नहीं है। देन फ्रॉम हियर कंस्ट्रक्ट हियर एंड देन जस्ट जॉइन दीज विद स्ट्रेट लाइंस। और स्ट्रेट लाइन भी ट्रिक से बनानी है, लगना चाहिए कि हमने बनाया है। देखिए थोड़ा एक्स्ट्रा बना दीजिएगा, ये लीजिए, थोड़ा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बनाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इट इज नॉट कंपल्सरी टू मार्क एरोज, गलत हो गया है, एरो नहीं लगाने। दिस इज नॉट अ रे डायग्राम, विदाउट एरोज आल्सो इट विल वर्क। हेक्सागन बन गया है पक्का, परफेक्ट सिमेट्रिकल हेक्सागन है। यू कैन आल्सो जॉइन द टॉप लाइन, इसको भी ज्वाइन कर देते हैं। देखिए ये हमारा हेक्सागन हो गया बेटा। दिस इज आवर रेगुलर, एरो नहीं दिखाना है, एरो गलती से बन गया। आई जस्ट इरेज द एरोज, डोंट वरी। पक्का? आपको क्या बोला मैंने अभी, क्या बनाना होगा आपको, कितने डिग्रीज, कितने 120 डिग्री के एंगल, 4। तो वो तो आपको पता है 120 डिग्रीज कैसे बनते हैं, 4 वर्टिसेस पे बना दीजिए उनको। लेट्स टेक दिस हियर, मेजर थोड़ा सा कम कर लीजिए, बस ऐसे सर्कल पे घुमा दीजिए। टाइम कंज्यूमिंग तो है बट करना तो पड़ेगा। येलो कलर से सारे बना देते हैं, चलिए ये लीजिए, यहाँ यहाँ से आएगा इधर, हो सकता है मैच ना करे तो कोई दिक्कत नहीं है, योर कंस्ट्रक्शन इज ऑलरेडी रेडी। सो लिटिल बिट, even if errors will come, nobody can cut your marks because you're showing all the steps of constructions. Then from here 120 degrees I'll draw, 120. Then from here this one, then from here we'll draw, देखिए तो exact आ गया, all of you will get exact 4 angles, 2 at the base and 2 here at the top. Show all the steps of constructions. Even if your school teacher is saying don't show, you can do it directly. Practice and show beta. This question, in case if it comes, it will be of 4 marks. This question, in case if it comes, it will be of 4 marks. Chali. 120. And then I'll draw the last 120, which is here. Which is here. And then which is here. Is this clear? Understood or not? Clear? सब बना दिया बेटा हमने। अब हमें क्या बनाना है, 2 चीजें और बनी है, 2 sides के perpendicular bisector, and then this construction is over. We have shown everything. Council cannot cut marks. And our final answer is also exactly right. बच्चे लास्ट में बनाते हैं जब सर्कम सर्कल, तो 1-2 वर्टेक्स इधर उधर जाती है, वो जाता नहीं कॉर्नर से, आपका नहीं होगा। Now, do you know how to draw the perpendicular bisectors of any 2 sides? I'll use a different color for this. Maybe I'll use green.
Come radius little more than half. One arc up, one arc down. And same procedure from the other vertex, other end. One arc up and one arc down. Clear? And then join it with the straight line. Is that clear? Join it with the straight line. Is it going from the center? Yes. देखिए जा रही है center से, वो तो जाना ही था. Then we'll do the other one. For that I'll use work violet color. आ जाइए violet को ले लेते हैं. I'll do for this one. You should change the measure of the compass. नहीं तो वो मैच करते कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे. थोड़ा सा चेंज कर दिया बेटा मैंने कंपास का मेजर. ओहो. One arc right, one arc down, and then from the other point, one arc up and one arc down. From the purple points, I have drawn purple arcs. And from the green points, purple or green तो यहाँ पे तो दोनों से बनी है. Green arcs बनाएंगे. And then join even this one with what line? Straight lines. Sorry, इसको straight कर लेते हैं. And then it should pass. चलिए. Dotted line will draw. Sorry, same color. Check, is it going from the center that we took? Yes. And this will be called as the circumcenter. Easy construction. To show all the steps of don't write the steps of constructions, but 120 degrees, two perpendicular bisectors, and the regular hexagon. Then this is complete. So that's it for the next type of constructions. Thank you, beta.